गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया है। तो इस हेल्पलाइन को किस लिए लॉन्च किया गया है? ताकि जो आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आपका जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से की जा सके। अब ये एक ऐसी हेल्पलाइन है जो कि अवेलेबल होगी राउंड द क्लॉक और एक टोल फ्री नंबर होगा। इस पे आप कॉल कर सकते हो। जो भी आप जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं और उनके साथ कुछ एट्रॉसिटीज़ हुई हैं तो वो इस पे कॉल कर सकते हैं और इस एक्ट के बारे में जान सकते हैं। इवन वैसे भी आप इन्फॉर्मेशन जो लेना चाहते हैं इस एक्ट के बारे में या इसमें अपनी पावर्स के बारे में वो इस जो है हेल्पलाइन से जानी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक वेब बेस्ड सेल्फ सर्विस पोर्टल भी होगा जो कि आपको अवेयरनेस देगा कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में आपके क्या क्या राइट्स हैं, आपकी क्या क्या पावर्स हैं, जो आपके कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके लिए आपके क्या क्या राइट्स हैं, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। ठीक है, जैसे आपको नॉर्मल आपका कोई भी हेल्पलाइन में आप कॉल करते हो तो आपको एक नंबर जनरेट कर दिया जाता है, एक कंप्लेंट नंबर। उसी के बेसिस पर यह है पूरी आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि आपकी कंप्लेंट कहाँ तक पहुंची, उस पर क्या एक्शन लिया गया। तो पूरी स्टेटस जो है वो आप ग्रीवेंस का देख सकते हो। ठीक है, तो ये हिंदी, इंग्लिश और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है या कंप्लेंट्स लेने वाला है ये आपका हेल्पलाइन। ठीक है, अब देखते हैं इस एक्ट के बारे में जो आपका SC ST एट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है 1989, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये एक्ट इसलिए 1989 में पास किया गया ताकि जो ऑफेंसेस इंडियन पीनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में जो है नहीं है, तो उन ऑफेंसेस को उन न्यू ऑफेंसेस को खासकर जो SC और STs के अगेंस्ट किए जाते हैं उनसे डील करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस देता है, ये राइट्स देता है विक्टिम्स को, और ये स्पेशल कोर्ट्स भी बनाता है। ठीक है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं ताकि जो ऐसे केसेस हैं जिसमें SC STs के साथ जो है अट्रॉसिटीज़ की गई हैं उनकी स्पीडियर जो है वो कंप्लीशन हो सके उन केसेस की। ठीक है, अब ये कमीशन इसमें जो है सिर्फ कुछ लोग जो आपके SC और ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट ही जो है केसेस जो है ये इसमें लॉन्च किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, समझ लो कोई पुलिस वाला है या कोई ब्यूरोक्रेट है, और अगर वो नहीं टाइम से काम कर रहा और नहीं कोई पनिशमेंट जो है वो एक्शन ले रहा, तो उसके खिलाफ भी इसमें पनिशमेंट हो सकती है क्योंकि उसने निगलेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ किया है। ठीक है, अब एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? आपके अरेस्ट से अभी नॉर्मल आपके प्रोसीजर में क्या होता है कि आप अभी अरेस्ट से बचने के लिए आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका अरेस्ट हो सकता है, उसके लिए आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। लेकिन इस केस में SC ST एट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल जो है, जो पर्सन जो अक्यूज है वो बेल नहीं ले सकता। ठीक है, अब इसके अंदर कंपनसेशन की बात है, रिलीफ की बात है, रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें आपकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी। ठीक है, तो उसमें देखा जाता है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है इन केसेस की, कितनी जल्दी निपटारा किया जा रहा है, कोई अगर कहीं लैग आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो ये सारी मैंडेटरी और पीरियोडिक इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, अब ऐसे एट्रॉसिटी प्रोन जोन्स जहाँ पर ये SC STs के खिलाफ ज़्यादा एट्रॉसिटी होती है उनकी भी आइडेंटिफिकेशन की गई है। ठीक है, अब इसकी कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है जो कि इस नोडल मिनिस्ट्री है, वो इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये पूरा एक्ट जो है ये आपके SC और STs की एट्रॉसिटीज़ से बचाने के लिए उनको जो है ये पास किया गया है। ठीक है, उसी के लिए ये हेल्पलाइन बनाई गई है ताकि इस एक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है न्यू कैलिडोनिया। तो ये एक फ्रेंच टेरिटरी है आपके इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ पैसिफिक में, रादर अगर हम स्पेसिफिक बोले तो साउथ पैसिफिक में है ये टेरिटरी, और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो फ्रेंच आइलैंड टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे आपको पता है ब्रेग्जिट रेफरेंडम हुआ था एक, वैसे अब यहाँ पर भी एक रेफरेंडम किया गया। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली बहुत लोगों ने फ्रांस का पार्ट रहने को ही जो है उसके फेवर में वोट किया। ठीक है, तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको कहा कि बहुत अच्छी बात है, जो है लोगों ने ये अपना एक तरह से विश्वास दिखाया कि वो फ्रांस के साथ ही रहना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक में फ्रांस की जो है प्रेजेंस को जो है वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक तरह से फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इस चीज़ का स्वागत किया है। लेकिन जो सेपरेटिस्ट थे, जो उस एरिया में जो आपके न्यू कैलेडोनिया में चाहते थे कि वो फ्रांस से अलग हो जाए, तो उन्होंने बोला कि
वो उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है। उन्होंने बोला है कि जो है पैंडेमिक के टाइम पर ये वोट नहीं होना चाहिए था, उस क्योंकि लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है कि ये पैंडेमिक के टाइम पे ये रेफरेंडम नहीं किया जाना चाहिए था, इसको डिले किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम ये पॉलिटिकल से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जोग्राफी क्या है इसकी, इस एरिया की। तो जोग्राफी देखते हैं। तो न्यू कैलिडोनिया जो रीजन है ये ओवरसीज फ्रेंच टेरिटरी है, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में पड़ती है, साउथ ऑफ वानुआतू। वानुआतू आइलैंड्स आप देखोगे तो उसके ही आसपास जो है ये साउथ में पड़ती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर के आपके ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट में ये टेरिटरी पड़ती है। ठीक है, तो जो मेलानेशिया रीजन है आपका, जो आपके मेलानेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, उसी का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो चेस्टर बहुत सारी आपका रीजन है, जैसे कि ये ग्रैंड टेरे, लॉयल्टी आइलैंड, चेस्टरफील्ड आइलैंड, बेल आर्कीपेलागो, आइल ऑफ पाइन्स। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, ये अपने आप में कंट्रीज हैं, रादर ये फ्रेंच टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो अब इसमें चेस्टरफील्ड आइलैंड्स जो है वो कोरल सी में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा न्यू कैलेडोनिया का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है गवर्नर्स रोल इन यूनिवर्सिटीज़। तो अभी आपको पता होगा कि एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई थी जब गोपीनाथ रविंद्रन जी को वाइस चांसलर ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी बनाया गया। तब जो है गवर्नर ऑफ केरला उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी बेटर जजमेंट के खिलाफ जाके उनको जो है ये अपॉइंटमेंट करनी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से उन्होंने ये सिग्नल दिया है कि गवर्नमेंट के प्रेशर में उन्हें ये अपॉइंटमेंट करनी पड़ी है। ठीक है, तो हमको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में तो नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गवर्नर का रोल क्या होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो गवर्नर होते हैं वो उसके एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक है, तो जो गवर्नर की पावर और फंक्शंस होते हैं वो एज द चांसलर वो जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक्ट बनाया जाता है, जैसे समझ लो कोई भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर एक एक्ट बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, तब वो यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया जाता है। तो उस एक्ट के अंदर पूरी पावर्स लिखी होती हैं कि गवर्नर जो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे तो उनकी क्या क्या पावर होंगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट उस एक्ट के अंदर पहले से ही मेंशन कर देती है। ठीक है, तो रोल ऑफ गवर्नर जो है वो इतना ही लिमिटेड है, क्योंकि उनके जो है पावर्स को पहले से ही मेंशन किया जाता है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के केस में देखो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2009 पास किया गया, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो विजिटर होते हैं किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो जो विजिटर होते हैं वो ही चांसलर्स को या जो वाइस चांसलर्स को, दोनों को ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जो चांसलर्स होते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो टाइटलर हेड्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि टाइटल उनके पास होता है, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट का जो काम है वो प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेट यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में चांसलर जो है वो गवर्नर खुद होते हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के केस में चांसलर जो है वो प्रेसिडेंट नहीं होते। एक उन चांसलर्स जो कि वो सिर्फ टाइटलर हेड्स हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ठीक है, अब जो वीसीज होते हैं, आपके वाइस चांसलर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है विजिटर कौन है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ही करते हैं इसको। ठीक है, अब जो है प्रेसिडेंट जो है वो विजिटर होने के की वजह से उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो ऑथोराइज इंस्पेक्शंस कर सकते हैं एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स के उन यूनिवर्सिटीज़ के, और वो इंक्वायरीज भी भेज सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ कैसे फंक्शन कर रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो विजिटर हैं, तो उनके पास पावर्स हैं इन सब चीज़ों की। वो चांसलर्स को भी अपॉइंट कर रहे हैं और वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कंटेक्स्ट में गवर्नर जो है वो खुद ही चांसलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है बक्सा टाइगर रिजर्व। तो अभी जो है बक्सा टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट डेंसिटी का भी इंक्रीज देखा गया है, और आपके जो है डियर, जो आपके टाइगर का जो आपका शिकार होता है, उनका भी इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो अब ये बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, इसमें ये एक तरह से फेवरेबल हैबिटेट होता है ना आपका, जो ये जो ये रीजन है, ये बक्सा टाइगर रिजर्व कहा जाता है कि ये फेवरेबल हैबिटेट है टाइगर का, क्योंकि यहाँ पर जो है डियर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब डियर जो है वो इंक्रीज होते हैं, तो अभी इसमें देखा गया कि जो भूटान है वहाँ से भी जो है ये माइग्रेशन हो रही है इस एरिया में। ठीक है, जो ये है एनिमल्स की, और ये आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर उन्होंने एक कैमरा ट्रैप लगा कर देखा कि ईस्ट दमनपुर रेंज जो है वहाँ जो है वहाँ पर उन्होंने कैमरा लगा के देखा कि ये जो है वहाँ से भी जो है टाइगर्स आ रहे हैं। ठीक है, उनको टाइगर वहाँ पर स्पॉट हुआ है। ठीक है, तो ये एरिया जो है
इसलिए न्यूज़ में चल रहा था, तो इसलिए हमको देखते हैं कि ये बक्सा टाइगर रिज़र्व कहाँ पर सिचुएटेड है और ये क्या इसमें जो है इसकी ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। तो ये बक्सा टाइगर रिज़र्व जो है वो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और फिब्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भूटान की, वो इसके नॉर्थ में पड़ती है, ठीक है। बक्सा टाइगर रिज़र्व, ये BTR मतलब बक्सा टाइगर रिज़र्व। तो सिंचुला हिल रेंज जो है वो इसके नदन साइड में पड़ती है पूरी। मानस नेशनल पार्क जो है वो आपके बक्सा के ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। फिर जो नेशनल हाईवे नंबर 31C जो है वो इसके जो है सदर्न बाउंड्री पर पैरेलल चलता है, ठीक है। फिर जो है ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन में इसके नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफ कोर्स, और वो आपका इंडो मलायन रीजन भी वहीं पर पड़ता है, और बहुत सारी जो है वो आपकी जो स्पीशीज वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसका एक तरह से इकोसिस्टम जो है वो आपका तेराई इकोसिस्टम है यहाँ पर बक्सा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो ये आपको इस कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। आपको ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं UPSC में, इन टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, इन सब के बारे में, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वेब वर्सेस हबल टेलीस्कोप। सो दो तरह के टेलीस्कोप हैं, आपको पता होगा ये तो ऑलरेडी, ठीक है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो अब आने वाले टाइम में लॉन्च किया जाने वाला है बस, और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप को कहा जा रहा है कि वो रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो इसको रिप्लेस करने वाला है, लेकिन नासा ये कह रहा है कि वो इसका सक्सेसर है, जबकि बात एक ही है ऑफ कोर्स, लेकिन वो इसको रिप्लेसमेंट नहीं बोल रहे हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप को, वो इसको सक्सेसर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से मापदंड में जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये वेब जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये बहुत ही सुपीरियर है, ठीक है। तो ये देखते हैं जैसे हम क्या क्या डिफरेंस है इसमें। तो वेवलेंथ पे कौन से काम करता है ये, तो आपका जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये इंफ्रारेड रेंज में काम करता है, ठीक है। लेकिन जो आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप है वो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट और विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम को ही कैप्चर कर सकता है, उसी को ही ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। अब इसका साइज जो है वेब का, उसका जो मिरर है वो 6.5 मीटर के डायमीटर का है, और हबल जो अभी आपका ऑलरेडी स्पेस में है उसका मिरर जो है वो सिर्फ 2.4 मीटर का है, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा उसका जो है जेम्स वेब का हबल के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा जो है वो प्राइमरी मिरर उसका बड़ा है, ठीक है। अब ऑर्बिट कौन करता, ऑर्बिट देखते हैं, ठीक है। तो हबल जो स्पेस टेलीस्कोप है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप होगा वो सन को ऑर्बिट करने वाला है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएगा, ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स ले पाएगा स्पेस की। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है एक तरह से, ठीक है। अब हम देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है। तो इसको लॉन्च किया जाने वाला है फ्रेंच गुयाना से, आपके साउथ अमेरिका से, और ये आपका जो है एरियाना 5 ECA रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाने वाला है, ठीक है। अब इसमें जो है आपका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की मिलकर ये कोलैबोरेशन की गई है। अब ये एक लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ये हमारी पूरी हिस्ट्री यूनिवर्स की, कब से यूनिवर्स शुरू है, जो आपका बिग बैंग की सिचुएशन से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री को ये ऑब्जर्व करने वाला है। सोलर सिस्टम कैसे जो है वो फॉर्म हुए, हमारा खुद का जो सोलर सिस्टम है वो कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ, ये सारी भी चीज़ों को ये ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है। अब ये एक हबल स्पेस टेलीस्कोप का कहा जा रहा है कि सक्सेसर है, जैसे मैंने आपको बताया नासा इसको सक्सेसर कह रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं कह रहा है, ठीक है। वो तो हमने रीज़न देख लिया, ठीक है। अब ये हमारे जो है फर्स्ट गैलेक्सीज को भी देखेगा, अर्ली यूनिवर्स को भी देखेगा कि कैसे बना है, और ये डस्ट क्लाउड्स के अंदर जाकर देखेगा कि स्टार्स और प्लानिटरी सिस्टम्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो स्कोप है, जो इसका जो मैंडेट है या इसकी जो एबिलिटी है ऑब्जर्व करने की, वो कई गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप जो स्पेस में लगा है, ठीक है। अब हम हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी देखते हैं। तो इसको 1990 में लॉन्च किया गया था, 1990 में। इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने किया जो है नासा ने बनाया था, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने उनमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया था, ठीक है। अब ये हमारा सबसे पहला मेजर ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जो कि स्पेस में प्लेस किया गया है। ये एक स्कूल बस से थोड़ा बड़ा है, और बहुत ही स्टनिंग इमेजेस ये हमारी डीप स्पेस की देता है, ठीक है। अब ये हमारे जो है डिस्टेंट स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इन सब को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जो इसकी अब बहुत ही एक फन फैक्ट है कि जो ये इमेजेस जो इसने कैप्चर की हैं वो कोई भी पर्सन जो है वो डाउनलोड कर सकता है या उसको जो है वो एक्सेस कर सकता है। हबल का जो डेटाबेस है वो नासा ने आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया है, ठीक है। तो उसको आप कोई भी जाकर जो है वो उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, या उसको जो ऑब्जर्व किया है इसने हबल स्पेस टेलीस्कोप ने उसको आप सारा देख सकते हो, ठीक है। तो आपका सारा स्टार्स,
सोलर सिस्टम में क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग हैं वो इसके डेटाबेस को जो है वो देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो अपनी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तो उनके लिए इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो अब ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बस आने वाले कुछ दिनों में इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा, और ये हबल स्पेस टेलीस्कोप को एक तरह से रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि नासा इसको कह रहा है कि वो सक्सेसर है इसका, ठीक है। तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऊपर जो है स्पेस में जाने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is National Helpline Against Atrocities. So Ministry of Social Justice and Empowerment has launched this National Helpline Against Atrocities. So this helpline has been launched so that the proper implementation of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act can be ensured. Okay, so this act was, of course, you know that this act was enacted to prevent atrocities on members of SC and ST communities. So this helpline will be giving them information. It will be making them aware about their rights. So in case there is any complaint under this act, then this complaint would be filed. So this helpline has been created for this SC/ST community members, and it will be accessible via a phone call or even a web-based self-service portal. Okay, so this will be available in not just Hindi and English but regional languages also. A docket number will be created, like, you know, whenever you launch a complaint, a number is generated, and you can track the progress of that complaint or your suggestion or your rather any information. So you can track it, how the government is responding to it or how the authorities are responding to it. So that's how this helpline is going to work. Okay, so let us also see what is this SC/ST Atrocities Prevention Act. So this act was created so that new types of offenses which have not been covered in Indian Penal Code or in the Protection of Civil Rights Act 1955, they will be covered under this SC/ST Atrocities Prevention Act. Okay, so these are special protections and rights which are given to the victims who are the SC/ST community members, and there is a provision of special courts and special public prosecutors so that speedier completion of cases can be ensured. Okay, so commission of offences can be done only by certain people, like only SC/ST members can launch this complaint, launch these complaints against particular people. Particular people are those who are non-SC and non-STs. Okay, so there is also provision for punishment of public servants. So in case there is any public servant, let's say a police officer, who is taking too much time or who is lagging in this in progress of this of any case which is registered under SC/ST Atrocities Prevention Act, then there is a provision that such public servant can also be punished for neglect of duties. Okay, so in general, you know that there is a provision for anticipatory bail, like if you are accused in a case and you are anticipating arrest, then you can go for anticipatory bail. But in this SC/ST Atrocities Prevention Act, there is no provision for anticipatory bail for the accused. Okay, so apart from compensation, relief and rehabilitation of victims, there are other certain provisions also, like there is mandatory periodic monitoring of the cases at district, state and national level. So the entire progress on this SC/ST Prevention Act is monitored at the 3-tier level, district, state and national level. Okay, so there is also provision for identifying atrocity prone zones. So there are certain areas where these atrocities occur more often than other places. So these zones are identified so as to keep the focus of the government on such areas and prevent these community members from atrocities. Okay, so Ministry of Social Justice, as you know, acts as the nodal ministry in this case, and it enforces the provisions of this particular act. Okay, so now let us see the next topic, which is New Caledonia. So you know that this New Caledonia is a French territory. Like in the case of Brexit, there was a referendum which was held on this New Caledonia also, but voters in this referendum have overwhelmingly chose
to remain a part of France. Okay, so that's why French President Emmanuel Macron has hailed this result of this referendum, and he has said that this is a confirmation of France productive role in Indo-Pacific region. Okay, so this New Caledonia is an area in Southwest Pacific region. So you can just go and look at the map also where this area is located. So but the separatists who wanted to leave France, they are disappointed because they are saying that they urged the government to delay the vote or to delay this referendum because we are undergoing a pandemic situation, and the people were not able to come out of their houses to vote in large numbers. That's why they have expressed disappointment in this case. But anyhow, this referendum has gone ahead, and people have chosen to remain a part of France. So this is even good for us because we have a logistics pact with France, and we will be able to access the services of French government in this Indo-Pacific region. Okay, so about this New Caledonia, let's see the geography of this area. So this New Caledonia is an overseas French territory in Southwest Pacific Ocean, and this is located in south of Vanuatu Islands, which is about 1200 kilometers east of Australia, and this is part of the Melanesia sub-region. Okay, so just see where is Melanesia. You will find it in southwestern Pacific region, and this New Caledonia is a part of that. Okay, so there are certain island groups which form a part of this New Caledonia region. So Chesterfield Field Islands, which is the dominant island, it is also present in the Coral Sea. Okay, just look at the map and see where this New Caledonia is situated, because you can expect a question in some or the other government exams. Okay, so now let us see the next topic, which is governor's role in universities. So a political controversy has erupted in Kerala, whereby the governor of Kerala has said that the reappointment matter of Gopinath Ravindran as the vice chancellor of Kannur University is politically motivated, and he had to approve his decision against his better judgment. So what it means is that he was not in favor of reappointing this particular person as the vice chancellor, but he had to do it uh, under the obligations that he had because of being a chancellor of the university. Okay, so why he had any obligation? So let us see this situation now. Okay, so what is the role of governors in state universities? So you know that a governor of the states, most cases, not in every case of course, but in most cases, governors of the state are the ex officio chancellor of the universities in that state. Okay, so what happens? A state government brings a law while establishing a university in state, and that particular law clarifies the position of the governor as the chancellor and all the powers and obligations that the governor would have with respect to that particular state university. Okay, so what it means is that state government decides how much power and functions will be there for the governor in that particular university as the chancellor. Okay, so but that is not the case in central universities. So under the Central Universities Act 2009, President of India is the visitor of a central university. Okay, so President of India is not acting as the chancellor or vice chancellor, but he or she is acting as the visitor of a central university. So as a visitor, the president appoints these chancellors in central universities who are merely titular heads. Okay, so who are working on behalf of on behalf of the president, that is rather the government of India, and they are appointed by the president. Okay, even the vice chancellors, they are also appointed by the visitor. And who is the visitor in this case? The president of India. Okay, so president as visitor will also have the powers to inspect any academic or non-academic related aspects of universities, and also to institute inquiries in case if he or she deems it fit to do so. Okay, so in what is the comparison between role of governors and president? So in case of central universities, president is neither the chancellor nor the vice chancellor. But in case of state universities, in most cases, not in every case, just remember that in most cases, governor of the state is the ex officio chancellor of the universities of that particular state. Okay, so now let us see the next topic, which is Baksa.
tiger reserve. So recently the forest density as well as deer, or rather the tiger's prey, not just deer of course, the prey of the tiger as well as the density of of the forests has increased in this Baksa Tiger Reserve area where Royal Bengal tiger is present. Okay, so because of this increase in forest density and because of this increase in the prey base, this Royal Bengal tiger is entering this Baksa Tiger Reserve after about 23 years. And that's why this particular Baksa Tiger Reserve has been in news. So we have to see the details. So this is believed to be a favorable habitat at the tiger reserve, and because of being a favorable habitat, because there is forest density and increased prey base, these tigers are being invited more to this region. Okay, so even tigers from the neighboring Bhutan are migrating to this particular region. Okay, so how the forest department got to know about it? They basically installed a camera trap picture and they spotted tigers from East Damanpur range of the tiger reserve, and they saw that because of this forest density and increasing prey base, these tigers are migrating to this Baksa tiger reserve. So we have to see the geographical aspects of this Baksa tiger reserve. So this tiger reserve lies in Alipur Duar district of West Bengal, and in the north of this Baksa tiger reserve lies the Phibso wildlife sanctuary of Bhutan, from where these tigers are migrating to this Baksa tiger reserve. In the north of side of this Baksa Tiger Reserve, Sinchula Hills are present, and Manas National Park lies on the east of Baksa. Okay, so the national highway number 31C roughly runs along this southern boundary of this Baksa Tiger Reserve, and in the easternmost direction, northeast India is there, and highly endemic Indo-Malayan region in case of biological habitat is there, and this area is basically Terai ecosystem. Okay, so now let us see the next topic, which is a comparison between Webb and Hubble space telescopes. Okay, so the James Webb Space Telescope, you know that it will be, which is the NASA's most powerful telescope, it will be launched in the next few days. That's why there is a comparison between these James Webb Telescope and Hubble Space Telescope. So people are saying that this James Webb Telescope is the replacement of Hubble Space Telescope, but NASA is saying no, not a replacement, but it is a successor because it is much bigger, much powerful than the Hubble Space Telescope. Okay, so let's see the comparison between the two. Like this James Webb Space Telescope will observe in the infrared range. Okay, but the Hubble Space Telescope can only see the ultraviolet and visible part of the spectrum. So the James Webb's primary mirror is much bigger, rather more than twice, as if we compare it with the Hubble Space Telescope. And the Hubble Space Telescope only orbits around the Earth, while the James Webb Space Telescope it will orbit around the Sun, which is about 1.5 million kilometers away from Earth. So it will be having more opportunities and it will be having more space to observe the entire universe. Okay, so what is this James Webb Space Telescope? So it was launched, it will be launched, of course, on an Ariane 5 ECA rocket from French Guiana in South America. And this rocket system has been contributed by European Space Agency. So that it is an international collaboration between NASA, European Space Agency, as well as that of Canadian Space Agency. Okay, so it is a large infrared telescope, and it will study every phase in the history of universe. So it will start from Big Bang phase, and it will go on to study how the solar systems were formed, and it will also see how our own solar system was came out in through evolution. Okay, so NASA is considering that it is a successor of the Hubble Space Telescope, and it will look further back in its time. It will find the first galaxies which were formed in the early universe, and it will be able to peer inside dust clouds from where these stars and planetary systems are even forming today. Okay.
So about the Hubble Space Telescope. So this Hubble telescope was launched in 1990. It was built by the it was built by the NASA, and it had some contributions from European Space Agency. So this space telescope has been there in around the Earth's orbit since 1990. Okay, so it was the first major optical telescope which was placed in the space, and it is larger than a school bus in size. It has captured stunning images of deep space, and it played a major role in helping astronomers understand the universe by observing the most distant stars, galaxies, and planets. Okay, so recently, even NASA has allowed that normal public or anyone from public can access the database which has been captured by Hubble. So, how it will be beneficial? Apart from astronomical aficionados like you and me, even the researchers from scientific community can access the database, and they can move ahead in their research of space, because it will be giving you immense information about the stars, the solar system, and planets, and how they have emerged in due time. Okay, so this is about Hubble Space Telescope, and now it will be succeeded by James Webb Space Telescope in the next few days. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.